का सबसे बड़ा साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल अपने 14th एडिशन के साथ आगे बढ़ रहा है। फेस्टिवल की शुरुआत 9 अक्टूबर से हो चुकी है और अब तक काफी एक्साइटिंग इवेंट्स हो चुके हैं। इनॉग्रेशन और ओपनिंग गैला में कई फिल्मी हस्तियों ने हिस्सा लिया और ऑडियंस को एक शानदार सेलिब्रेशन दिया। अभी भी फेस्टिवल के दौरान मल्टीपल फिल्म प्रीमियर्स, मास्टर क्लासेस और म्यूजिकल ट्रिब्यूट्स जैसे गुरुदत्त और अफगान म्यूजिकल सेलिब्रेशन चल रहे हैं, जहां फिल्म लवर्स और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बारे में फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि ये एडिशन सबसे एम्बिशियस और इम्पैक्टफुल है और 19 अक्टूबर तक और भी काफी इवेंट्स हैं यहाँ प्लान्ड हैं। तो और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। It's a new experience for me, new experience for my family. My family's here. My friends are here that will come later. So it's been very nice and it's very welcoming and it's amazing being with other South Asian creatives. हमारी मूवी का नाम है Me and You. It's about a Pakistani father and his son and just their different perspectives in life, living in North America. Perspective of the dad versus perspective of the son, and just a beautiful story about two sides just loving each other but also clashing and how to bridge the gap and understand that. That's what I'm hoping that all these festivals do, and also just meet people that have been in the business for so long, that somebody like me or other creatives, whether you're a writer or cinematographer, director, you can talk to somebody with like 10, 15, 20 years of experience and act like it's, you talk at the same level and get advice. So it's a real beautiful thing and I'm looking forward to the rest of the week. This is one of the kind of the event which we're looking forward, right? IPSA is a local GT area में होता है। हम एक टीफ है और उसके बाद जो सक्सेसफुल हुआ है वो IPSA है, जहाँ पे 100 मूवीज़ ये साल भी रिलीज़ कर रहे हैं ये लोग, राइट? एंड वी गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड ईच एंड एवरी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर गेट एन अपॉर्चुनिटी, वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग स्मॉल मूवी और ऑन द लार्ज स्केल मूवी, दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। और आज का जो गाला है, वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर दैट। यहाँ पे होने ही चाहिए क्योंकि कनाडा हैज़ अ वेरी डाइवर्स पॉपुलेशन, राइट? और ऐसे इवेंट करोगे तो पीपल विल गेट द प्लेटफॉर्म एज वेल एंड दे कैन हैव एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जैसे आप देख रहे हो कि रियलिटी जो शो हो रहा है, राइट? उसमें पहले तो बड़े बड़े सिंगर्स को ही मिलता था, राइट? और यहाँ पे भी बड़े एक्टर्स को। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसी के पास भी पैशन हो एक्टिंग का, डायरेक्शन का, तो आप कर सकते हो ऐसा, और ऐसे इवेंट होने चाहिए। यहाँ पे तो हमेशा आके अच्छा ही लगता है और सनी पाजी ने बुलाया है एंड वी हैव बीन इनवाइटेड बाय टर्किश एयरलाइंस एंड वी आर गेस्ट विद टर्किश एयरलाइन। इट्स ऑलवेज सो वेल लेड आउट द होल प्रोग्राम। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि आपको एक वाहवाही मिलनी चाहिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ रीअश्योरेंस एंड एवरीबडी लाइक्स दैट कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो और जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਸਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਸੋ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲ ਦੇਅਰ ਡੂਇੰਗ देयर ਜੌਬ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ 2 ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈ। मूवीज़ बारे भी ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੰਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈਲਪੇਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੋਮਲੈਸ ਦੇ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹੰਗਰ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮੂਵੀ 'ਚ। ਦੂਸਰੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਸੌਰੀ ਇਟਸ ਅ ਗਰਲ। it's about the women who are struggling for their living and abortion. It's a girl. So how the Punjabi people, how the old ladies act, किस तरह रिएक्शन होता है। सो लेडीज़ किस तरह स्ट्रगल कर रही है फीमेल, वो दिखाया उस मूवी। देखो इस साल 14 साल हो गए ने IPSA ਨੂੰ और इन 14 सालों में घट्टो घट्ट मैं 10 साल तो आया ही होवांगा, पर
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਏ ਕਮਰਸ, ਨਏ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ, ਨਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਐਂਡ ਜੋ ਸਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੂਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੀਨੂ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਰ ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਗਰਲ। ਇਹ 2 ਸਾਡੀ ਹੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਏ ਕਮਰਸ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਮੈਂਸ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਸਟ ਆਫ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ ਹੇਅਰ। ਤੇ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੰਗਸ ਇਨ ਦ ਰਿੰਗ and Sings in the Ring is about a pro wrestling dynasty, Gama Singh ਦੀ dynasty ਆ। Gama Singh ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Bret Hart ਦੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ। Bret the Hitman Hart is a very world famous wrestler, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਨਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WWE ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਟੈਂਪੀਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਫਿਊ ਜਿੰਦਰ ਮਹਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ WWE ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੇ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ October 20th ਔਨ Crave TV in Canada। ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਈਕ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ TBD, to be determined। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਟਰੈਕ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਊਂਡ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੱਖਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿਤਿਕਾ ਕਨਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡਨ ਲੋਟ ਆਫ ਫਿਲਮ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਇਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਕਲਚਰਸ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਦ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। You want me to hold it? Are you okay? It's really very exciting to be here. I just arrived from Tokyo, where it's an incredibly important festival. It's the oldest festival in North America, and it brings together people from all cultures, all around the really very important things of Indian and South Asian culture. So it's fantastic to be here, and it's a very unique moment, and I'm very proud to be and honoured to be invited to be here. Pleasure being here. Yeah, it's a great pleasure to come and continue the experience from our Indian experience of shooting in Amritsar. So it's just a completion of the whole project. You mentioned Amritsar, right? So you shot your movie there? We shot half of the movie in Amritsar and half of the movie in Montreal. It's called Calorie, and it's a family drama of a Indian-Canadian family that lives in Montreal. And there was a traumatic experience in the family household, and the children, they basically go back to family members in India and reconnect with their country, and so it's a whole how would you put it? Epiphanous, cathartic experience, Absolutely. I guess, for them. But it was a fabulous experience. Mark is the director of photography on the film. I'm the production designer, and we worked with an incredible crew in India. We sort of have to give a shout out to them. They were incredibly talented, and absolutely, it always has been necessary, and it's getting, I guess, more and more attention as there are more filmmakers like Isha, who's an incredible filmmaker, and get the chance to film with her in India and in Montreal. It was great. So, of course, the more diffusion, or what do you say? Diversity. Airtime, diversity. Yeah, it was a really complete experience.
and the landing of the two crews was like an incredible. Synergy to Yeah, it, really. it It's was- like we were so on fire with this film in a way, and the creativity was off the charts, right? Absolutely, and we still keep contact with some of the crew members over there. So Still dear friends. Apparently, I'm going back for a wedding for my decorator. I promised them I'd go back if one of them got married. One of them offered to get married so that I could just go back and visit. So we're all very close to them, and we loved India and the culture. Calorie was actually the first film that I ever had the opportunity of working on, and it was such an amazing experience being around the incredible cast and the incredible crew. And I especially want to thank Isha for taking a chance on me and allowing me to be a part of such a special story. And as for IFSA, I'm so excited to be here. I've heard such incredible things. It's my first time being here, so I'm really excited for the opportunity and to see what more is to come. Regardless of where you look on social media, you do see a lot of hate coming left and right. And so I think it's definitely very important to see the South Asian representation, especially in somewhere like Canada where there is so much diversity everywhere. I just think it's so important, especially for all the young little girls, all the young little kids out there that look like you and I. I think it's definitely an inspiration for everyone. Yeah, it's my first time coming to this event, and I'm really excited to discover it, to have our film Calorie being presented. And yeah, it's just really an honor to be here with the community, and looking forward to having people watch the film and hear their reactions. And yeah, just to be here is really nice. No, I'm happy to be here. This is my first time at IFSA. I'm here with the film Have You Heard Judy Sing? That's a lovely gathering. It's great to bring all the community together, support our stories, a lot of local stories. There's lots of talent amongst the South Asian young people, filmmakers, bringing people from abroad. Yeah, it's exciting. IFSA के साथ तो मैं कई सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ, और यहाँ लोकल डायरेक्टर्स हैं, हम यहाँ के फिल्म मेकर्स हैं. तो एज़ टीवी एंड फिल्म डायरेक्टर्स हम यहाँ के इंस्पायर खुद होते हैं, क्योंकि हम कई फिल्म मेकर्स को जानते हैं जिनकी फिल्में यहाँ पे आती हैं. और जेन्युइनली जो नेक्स्ट लीड है टैलेंट की, जो नेक्स्ट वेव है टैलेंट की, वो हमेशा यहाँ पे देखने को मिलती है. कौन से स्टूडेंट्स हैं जो फिल्म्स बना रहे हैं, कौन अपनी पहली शॉर्ट फिल्म लेके आ रहा है, और यहाँ लोग अपनी सेकंड शॉर्ट फिल्म, थर्ड शॉर्ट फिल्म, लोगों के एवोल्यूशन एज फिल्म मेकर्स हमको इसी फेस्टिवल में देखने को मिलता है. तो इसलिए ये फेस्टिवल हमेशा एक्साइटिंग है, बिकॉज साउथ एशियन टैलेंट एटलीस्ट GTA से जितना उभर के आ रहा है, वो इस फेस्टिवल में सारा आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है, और हम सारे लोग प्लेटफॉर्म चाहते हैं. और IFSA ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे, बिकॉज लैंग्वेजेस अलग हैं, हमारी कंट्रीज़ अलग हैं, बट एक प्लेटफॉर्म में अफगानिस्तान की फिल्म है, पाकिस्तान की फिल्म है, इंडिया की फिल्म है, और कनाडा के कम्युनिटीज़ की फिल्म हैं. तो आप यहाँ से अपने देश की फिल्में देख सकते हैं, पर वहाँ के फिल्म मेकर्स क्या सोच रहे हैं, यहाँ के लोग किन आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर सिनर्जी भी बिल्ड होती है, और एक कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे लोग एज फिल्म मेकर्स ग्रो कर सकते हैं. यहाँ पे एक्सपीरियंस फिल्म मेकर्स आके बात कर सकते हैं. तो इन दैट सेंस ये प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के टैलेंट के ग्रो होने के लिए. Yeah, I mean, so for me, what I'm most excited about is the IFSA Film Summit. So it's a great opportunity for the industry to come together to learn, to obviously learn from the master classes, from the films that are at the festival, but also to learn about the different opportunities within the industry. You have workshops for the different unions and guilds, and just the opportunity to connect with each other, to be able to find your peers within the industry, your fellow South Asian filmmakers, to be able to create content. So I'm really excited for that. This one was an incredibly difficult thing to shoot because it's a 20-minute short film. It's a single take. 20 minutes. It's a story about a stand-up comic who's going through the worst possible pre-stage ritual. Everything goes wrong, and then he goes on stage, and then all the right words come out of his mouth, and he nails it. So that's the story arc, and I really wanted to do it in a single take because that's the only way to capture the nervousness, the anxiety, the energy. And the whole story happens basically like 15 minutes right before he goes on stage. So that's I thought that was the only way of doing this kind of story. So I wrote, directed, and produced it. Of course, the shoot was very difficult, but we nailed it. Oh, lots. There's lots of amazing talent here. I saw it with Shashank here. The sheer dedication on set is incredible. I haven't seen anything like it, and so I'm so lucky to be part of this festival here.
Yeah, I can't wait to actually watch the film because I haven't actually watched it yet, believe it or not. So it's on a lock and key. Come for the premiere, watch it on the big screen, Sunday 7 p.m. at Cineplex. बहुत अच्छा लग रहा है. पहली बात तो लोकल हमारे लिए फिल्म्स देखना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल is a very big deal. So congratulations to IFSA for the opening night. Pleased to be here. Thank you. I'm actually here with my friend Sunita Vyas. And one of my most beautiful things I think organizations like this do is एक तो local artists and local films को platform देते हैं और international films जो हमारे को मौका मिलता है यहाँ देखने को. So I think that's a beautiful thing as well. I think IFSA is the only platform that has given a space to Canadian artists, which is very, very commendable. And like whenever I talk to Sunny, he will tell me that how art is connected to mental health and how people, when we go for a movie or we watch something that we like, it actually releases our stress. So I think there's such a great synergies with mental health, movies, art together, and I think IFSA has done a great job. I have known them since the time that the inception happened 9-10 years ago, and it's come a long way, and I'm sure it's gonna go to greater heights. So I think it's brilliant what we are seeing here today. तो हाय, मेरी मूवी का नाम व्हाट्सअप बॉस है. आई एम डायरेक्टिंग इट बट आई एम ऑल्सो वन ऑफ द एक्टर्स इन द मूवी. एंड व्हाट्सअप बॉस द फिल्म इज़ अबाउट कि व्हेन यू गो टू फाइंड आउट द ट्रूथ, हाउ फार डू यू वांट टू गो एंड एट व्हाट पॉइंट डज दैट इन्वेड समन्स प्रिवेसी. किसी की प्रिवेसी में तुम इन्वेड करते हो या किसी के लिए तुम अजम्पशंस बनाते हो, तो कितना दूर तुम्हें जाना चाहिए. दैट इज़ व्हाट द जर्नी इज़ अबाउट. दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट. बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली. आई लव द एक्सपोजर दैट एवरीवनस गेटिंग. आई लव द नेटवर्किंग इवेंट, एवरीथिंग, एवरीवनस मीटिंग एवरीवन. इट्स अमेजिंग एक्चुअली. इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस. डेफिनेटली आई थिंक IFSA इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन. 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था किसी और की फिल्म के लिए मैं देखने आया था, एंड आई एम बैक हियर. सो इट डेफिनेटली सर्व्स एज एन इंस्पिरेशन टू कीप कमिंग बैक हियर. ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ. ਆਪਣੇ ਸਨੀ ਭਾਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ, ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ. ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 2014 ਜਾਂ 2015 'ਚ ਇੱਥੇ IFSA 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੂਵੀ 2015 ਜਾਂ 16 'ਚ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, 17 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ TV ਸ਼ੋ ਲੇਟ ਬਲੂਮਰ ਦਾ ਵੀ. ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਫਿਲਮ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਨੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ. ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर द ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. So the movie is in the short film category, and the name of the movie is called Theeram in Malayalam. In English it's called Shore. So it's basically talking about the subject of dementia, and the short film is in collaboration with Canada Academy of Geriatric Psychiatry and also other friends, and one of my friend Alan is the cameraman of the short film, and it's a 20 minutes short film, and it mainly talks about how the family handle the situation of a person who is having a situation called dementia. That's all about it, and it will be screening on October 14th at 6:30. So yeah, that's it. It's been absolutely amazing being here. It's my first nomination as an artist, and being part of a music video is amazing. So it's great to be here and great to see all the other artists and actors and directors. Yes, so I wrote a song called Faryad. It's a heartbreak anthem, and we created a short film around that, and that's what's been nominated today. बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली. और हाँ, मेरी तो डेब्यू मूवी है. द मूवी इज़ कॉल्ड ब्लू. तो एक्चुअली मूवी में लड़की बोल नहीं सकती और बात नहीं कर सकती, और इट्स अ मूवी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. तो थोड़ा सा डोमेस्टिक अब्यूज़ है, थोड़ा सा डेफ एंड म्यूट कम्युनिटी के बारे में भी है. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म. देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्विस्ट and fun things to see, so please do come see it. Cineplex on October 18th at 7 p.m. Courtney Park. My name is Kate Ziegler. I'm the president of Actor Toronto. This is... I'm Paul Constable. I'm the treasurer of Actors. Wait, no, I said treasurer. Oh, you're the... No, you said president. We've only been drinking the lime green with cumin, I swear. I think it's fantastic. I mean, one of the things I think that I just found out tonight is that Actor Toronto itself, this is a new kind of like, the communication between the two hasn't been strong enough yet. So we are here as ambassadors to our union. We want to come to more events like this. We want to find ways that we can support film festivals like this. And of course,
the members of our union that are actors that in this event tonight. There's a really great Actor Toronto production called Late Bloomer that comes out of the South Asian community. We're like so proud to see some of those actors here tonight and celebrate them, and just to be invited to be witness to this beautiful community is really special to us. लग रहा है कि हम घर ही आ गए हैं। जी जी। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड व्हाट इज़ एक्स्ट्रा स्पेशल फॉर मी इज़ कि मैं मतलब मेरे पूरे करियर में एक डायरेक्टर है जिनके साथ काम करके मुझे इतना कुछ मिला है। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ एंड दैट डायरेक्टर इज़ अनूप सिंह एंड दैट फिल्म वॉज किस्सा। सो अनूप has really is the reason why I'm here. He's got me here. So to be at this wonderfully inclusive film festival, thanks to Anoop, with Anoop is really such joy. And I'm so happy that IFSA gave our film Shadow Box by Soumya Nanda Sahi and Tanushri Das such a warm welcome by making it the opening film. And the audience was really something so special. The way they connected to the film was so moving. It was one of the best Q&As we had. The film has traveled around the world, but really this was a really remarkable screening and a very special one. Dekhiye, everybody's story should have a space to be celebrated. So it is not, about this region versus that region. I think it's really nice when you can have a feeling of home away from home, and when you have a film community that is robust, that supports new voices in filmmaking, because I know that's one of the things that's important to IFSA. Is to nurture, promote, Canadian new voices in filmmaking, and I'm so excited to see the future of this film festival. I think the work that they're doing is really important, especially in a time like this. I think it will make the world smaller instead of feeling so isolated, and that's what I think cinema does. I think that's what these film festivals do. इस बार हम डाउनटाउन भी गए, मिसिसागा भी गए, Brampton, and then I went to the Portuguese side. Oh, nice. So at this time I really went to Chinatown. So I felt I really got a sense of the vibrant diversity of Toronto, and I'm definitely coming back. I don't have a movie this year. We had one last year, but I'm on the board of advisors for IFSA, so here to support Sunny and his team and enjoy the great films from South Asia, showcasing our culture, our events, our music again this year. We absolutely need this. We need to celebrate this. We need to have more of this, because if we don't tell our stories, nobody else is going to tell our stories. I've always believed in that, so I'm really happy again to be a part of this event, supporting it, and enjoying the festivities around me. We need to create more awareness so people know what we are all about, because a lot of people are judging Indian Punjabi people these days, right? So when we do these events, we're out there, then they know what is the culture all about. Yeah, thank you for asking these questions regarding the youth issues. Well, wherever I go, I teach youth to respect people from different castes, faith, and communities, and let's make our planet a better planet for all of us. And from this platform onward, I appeal all the filmmakers to raise the issues related to youth, like depression, like violence, and the other things, and give importance to these things to make our planet a better planet. Thank you. Thank you. It is an absolute honor to be here at IFSA, and I have to say they have done an exceptional job with the events that they put together. They've worked so hard, and I want to show my gratitude in the fact that they've recognized our film
and they've highlighted our film. It means the world, and I'm just really excited to be here. This is such a beautiful venue. Oh my gosh, I think definitely, because we're such a diverse nation, and there are so many of us, and we're just we're always we love the diversity, and we embrace each other's differences, and we want to know more and participate in each other's differences, and this is the best way to do it. So I definitely think they're doing an exceptional job, and I think that we should have more of this. Well, we're proud to be a sponsor. This is the 14th annual IFSA. Sunny Gill and his team do a great job. Celebration of cinema, celebration of talent. I love the fact there's over 100 films. This is an event that we just love to have every year. Yeah, we want to support Sunny and continue to see this grow. He has it all under control, so he doesn't need much help. ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ IVF ਹੁਣ ਹੈ ਸੇਫ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੈਸਟ IVF ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਸ ਟਿਕਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਓ, ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। Make every celebration valuable. Happy Diwali. TD, ready for you.